विनत विविध भूत व्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवतः सुधामुपनिषत् दुग्धादिमध्योधृताम् संसाराग्निविधिफलव्यगत प्राणात्मसञ्जीवनी पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमत व्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम् जननि परिपूर्णागसि जने हिता श्रोतवृत्या भवति च कदाचित् खलु सति निर्दोषा ह्यः जगतीति तमुचितैः उपायैर्विस्मार्य स्वजनस्य माता तदसिनः जयति सकल विद्या वाहिनी जन्मशैलो जनिपथ परिवृत्ति श्रान्त विश्रान्त साखी निखिल कुमति माया सर्वरी कर्मण्यो निगम जलधिरेला पूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः नमः प्रणवशोभितम् नवकटाय खण्डाम्बरम् त्रिदण्डपरिमण्डितम् त्रिविधसत्त्वनिर्वाहकम् दयाञ्चितदृगञ्जलम् दरितवादिवाग्वैभवम् क्षमादिगुणसागरम् शरणमेमि रामानुजम् ऊर्ध्वपुण्ड्रवन्तम् त्रिजगत्पुण्यफलम् त्रिदण्डहस्तम् शरणागतसार्थवाहमीडे शिखया शेखरिणम् पतिम् यतीनाम् सदूर्ध्वपुण्ड्रमण्डितः मालिका सितान्तरीयसूक्ष्ममय्य ममाविरस्तु मानसे हरिः नमज्जनस्य चित्रभक्तिचित्रतूलिका भवाहिरियभञ्जने नरेन्द्रमन्त्रयन्त्रण प्रपन्नलोकभैरव प्रसन्नचारुचन्द्रिका सठारिहस्तमुद्रिका हठाद्गुणोऽस्तु मे नमः भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम् तिन्त्रिणी मूलधाम्ने च षठकोपाय मङ्गलम् ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे तिन्त्रिणी मूलधाम्ने च षठकोपाय मङ्गलम् सहस्रसालिग्रामदर्शनम् मुक्तिनाथस्य समीपे नारायणघाट प्रान्ते सर्वे अर्चना विशेषेण भगवन्तम् अर्चयन्तः परितः पारायणादिकं च कुर्वन्तः अत्र भगवन्ति भगवतः शालिग्रामस्वरूपस्य हिरण्यगर्भस्य एतस्य अत्र शूलामहोत्सवः
जय श्री हाँ ओम हरे नमः ओम देवादेवे नमः ओम धर्माधिकारिये नमः ओम नारायण समाधिताय नमः ओम दारिद्र्यनाशाय नमः ओम धर्मे नमः ओम सर्वब्रह्माण्ड अत्र पंचकुंडीय महायज्ञं पद्मकुंडः त्रिकोणकुंडः चतुरस्रकुंडः एवं अत्र चक्राब्ज मंडलेन सह अत्रत्याः श्रीवैष्णवाः आराधनं कुर्वन्तो वर्तन्ते। तदग्रे कलशस्थापनं स्थापितकलशानां च पूजनं तत्रैव ओम समस्त परिवार विस्तार सर्वनिध मंगल विग्रह श्रीमते नारायण नमः नृत्य वाद्य विनीतानि पुराण पठनानि यतो पकारै सकलैः सम्मतवारागवां संतोषो भावना तव संतोषो भवति सदा। अब धूप देव नामे तेरा आचीनं मन्दिरम् अत्र तु सेवायां पुष्पसेवायां निरताः नैपालाः महिलाः। जय श्री जय श्री वैकुंठनाथ जी मंदिर सालिग्रामैः सह विराजते। अत्रापि पुनः सालिग्राममन्दिरम् असंख्याः सालिग्रामाः विभिन्नस्वरूपाः एकत्र विराजन्तो वर्तन्ते। जी विभिन्नाः पारायणकर्तारः चतुर्दश विद्यापारायण एवञ्च वेदपारायणं वेदाङ्गपारायणम् अत्र तु पुराणपारायणं भवति। विभिन्नाः विद्वांसः विभिन्नान् ग्रन्थान् पारायणं कुर्वन्तो भवन्ति। श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ मंदिर प्रतिष्ठार्थं यज्ञशाला त्रितलयुक्तम् एवं विशिष्टक्रमेण चतुर्द्वारयुक्तम् इदं यज्ञशाला विशेषाधिकं आलोकयितुम् आनन्दश्च भवति।
तदत्र सेवाकेन्द्रं श्रीचूर्णं இன்னும் போடல, யாரும் வரல, காணலையா? இது என்ன பண்ணியிருக்கா? வெயில் நல்லா இருக்கு, கட்டியிருக்கா. கோபுரம் நல்லா இருக்குல்ல. महालक्ष्म्याः गोपुरं भगवतः वैकुण्ठनाथस्य विमानं महालक्ष्म्याः गोपुरमिति कृत्वा तत्र श्रीपुण्ड्रम् अद्भुतेनैव क्रमेण येभिः ऊर्ध्वपुण्ड्रविन्यासक्रमः शङ्खचक्रयोः विन्यासक्रमः अत्युत्तमः राजते। मन्दिरप्रवेशार्थं पार्श्वद्वारम् तदत्र महालक्ष्मीः तदत्र मत्स्य कूर्मादिरूपेण 10 अवताराणां सान्निध्यं तत्सहितः एव अयं वैकुण्ठनाथः, तस्य मुख्यं मन्दिरं, तदीयं गर्भगृहद्वारं, शुकनासीद्वारं, जयविजयोः विजययोः द्वयोः अपि ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलकम् मातुः सन्निधिः நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், சுவாமி எம்பெருமானார், அதோட சுவாமி மணவாள மாமுனிகள், ஆண்டாள், एतेषां सर्वेषाम् उत्सवविग्रहादिकमपि आगमिष्यति इति श्रोश्रूयते। महाराजलाई भेट गर्नको लागि भगवानको कृपा भएको थियो भने आज मेरो भाइ प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए बनाया हुआ दिव्य यज्ञशाला, चतुर्द्वार विशिष्ट बहुत अच्छा यज्ञशाला है और कुंड चतुष्टय के साथ चक्राज्य मंडल वेदिका, अर्थ कोण वृत्त वृत्तवृत्तम वृत्त कुंडः और त्रिकोण कुंडः चतुरस्र कुंडः इति येभिः विशिष्टः निर्मीयमानः वर्तते।
प्रायः अद्य पूर्णतां याति। एवञ्च सायम् अत्र पूर्णरूपेण प्रोक्षणादिना शुद्धं कृत्वा यज्ञस्य आरम्भः भविष्यति। जय श्रीमन्नारायण।